Okay, now next class, that is what C++ output, how to print text on the screen. Okay, so C++ output print text. So as I told you that in the previous class, cout object. So in Java it is called it is equal to system.out.println. In Python it is called print. Okay, so here cout object will be used with this operator, insertion operator, to get print output, to get the text print on the screen. Okay, so in the previous session I have discussed it. This is the syntax. Simply this is the syntax. Include iostream is a library, header file library, okay, which will be used to function with both input and output objects, okay, using namespace standard. So it is a standard library here to use the names for the objects and variables. Main function I told you that cout is an object. So here cout will be used to get the, with insertion operator, to get the output hello world on the screen as a text. Okay, so we can add many cout objects. If you want to get many lines as a printout, so whenever we use cout objects, many objects, so we need to remember that it will not insert a new line at the end of the output. At the end of the output, it will not add a new line. Okay, see here what happened. See, it will not insert a new line if you add out objects. Okay, I told you that in this place we can use, in the place of the standard library using namespace, we can use std here, standard library std, okay, and 2 colons, the operator. So we can omit that standard library. In place of that, we can use this standard in main function, inside of the main function with 2 colon operators, cout, 1 cout. For this also we need to write the same standard. Okay, now you run this. So as many objects, cout objects you use, you need to, for every line we need to use the standard operator like this. Okay, so now here these 2 line of statements, text, there is no any next line. Okay, if we use one more statement, std, okay, cout, that is what cout, use insertion operator, means 2 smaller than, and the string whatever you want to keep. Always I told you that string will be kept in double quotation marks. I am happy here. Okay, now what happened? Terminate with the sentence, line of instruction with the semicolon. Okay, every instruction I told you that this is called how many statements in main function, how many statements, 3 statements are there. For every end of statement, semicolon compulsory. You will get 3 lines of 3 result here, but all the text will be in 1 line. क्या बताया था कि ये रिजल्ट लेने के लिए ये क्या है कि हिंदी में बताता हूँ. ये cout is an object. ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవడానికి. మనము ఎన్ని coutలైనా రాసుకోవచ్చు cout ఆబ్జెక్ట్ మనం ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలంటే. కానీ ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే అన్ని లైన్స్
ఒకే లైన్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లైన్ ఉండదు. हेलो वर्ल्ड, आई एम लर्निंग सी, ఎంత ఒకే లైన్లో ఉంటాయి. सब एक ही लाइन में रहते हैं. सो हेलो वर्ल्ड, आई एम लर्निंग, सब एक ही लाइन में रहते हैं. तो इस जगह पर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड उसको निकाल दिया मैंने. std लाइब्रेरी को मेन फंक्शन है अंदर ये टू ऑपरेटर्स के साथ, कॉलन ऑपरेटर के साथ लगाया. मैनी सी आउट ऑब्जेक्ट्स मैंने इधर इस्तेमाल किया. तो हेलो वर्ल्ड, आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस पूरा एक ही लाइन में. तो उस समय क्या है कि ये तीनों स्टेटमेंट अलग अलग लाइन में चाहिए, तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा इधर, वो चीज़ बता रहा है कि नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर चाहिए. वो नेक्स्ट लेटर कैसे होगा, न्यू. इस क्लास में न्यू लाइन्स के लिए हमने अगर एक न्यू चाहता इस ये कैरेक्टर को हमने लगाना पड़ेगा. /n कैरेक्टर को हम कहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, हर एक लाइन के अंदर. तो के अंदर आएंगे. अब हम इस जगह पर /n, इस जगह पर /n, इधर हियर यूज /n. तो अभी रन कर आपको हर तीनों लाइन सेपरेट न्यू लाइन मिलेगा. /n को क्या बोलते हैं, न्यू लाइन. एरर मिल रहा है कि ये गलत लिखा हमने, क्योंकि इस /n को आप हमेशा यू नीड टू कीप इट इनसाइड ऑफ डबल कोटेशन मार्क्स, ओके, नॉट आउटसाइड ऑफ डबल. तो इसको /n को क्या बोलते हैं, न्यू लाइन स्पेस कैरेक्टर. न्यू लाइन कैरेक्टर अगर आपने ये न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं लिखेंगे तो पूरे लाइन सिंगल लाइन में आपको पूरे कैरेक्टर्स सिंगल लाइन में दिखाई देंगे. तो आपका न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है, क्लास को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. न्यू लाइन कैरेक्टर मतलब /n. मैंने जैसे बताया ऑब्जेक्ट्स हम लगा सकते हैं. तो जैसे कि पहले क्या था, सब एक ही लाइन में थे. अभी न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए /n लिख दिया. ये /n को इनसाइड ऑफ कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना पड़ेगा. वी नीड टू राइट /n आफ्टर एवरी सी आउट स्टेटमेंट, okay, inside of double quotation marks to get the new line. Otherwise all the lines will be in single line, okay. So that is called new lines, okay. So next is what, so we can also use another insertion operator and place the /n character after the text. See, just इस टाइप में. So one more insertion operator we can use, and then this /n. Okay, generally we write the cout statement like this. Here this is the string, so here inside of the string we need to keep the /n. So in place of that we can use